So 6 characteristics of law. हमें क्यों ये पढ़ने पड़ते हैं 6 characteristics? Because जब भी हम किसी ऐसी स्टेटमेंट को जिसको हम लॉ कहना चाहते हैं उसको लॉ और नॉट लॉ में डिफरेंशिएट करना चाह रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या उसमें ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं आपको कोई पैराग्राफ, कोई स्टेटमेंट, कोई रूल, कोई लॉ लिखा हुआ मिलता है, लॉ नॉट रूल, तो आप ये देखेंगे कि क्या उसमें ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल हैं। इफ ऑल दीज 6 कैरेक्टरिस्टिक्स आर अवेलेबल, आप कहेंगे ठीक है ये लॉ है। लेकिन अगर इसमें से कोई मिसिंग है या वो स्टेटमेंट इस पर पूरा नहीं उतर रही, तो फिर आप उसको लॉ नहीं कहेंगे, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। इसमें यूनिफॉर्मिटी, यूनिवर्सलिटी, एक्सटर्नैलिटी, कंटेंट एंड फॉर्मुलेशन, लास्ट इज द सैंक्शन। इसको समझना जरूरी है कि ये कोई भी अगर लॉ होगा उसमें कैसे 6 कैरेक्टरिस्टिक्स रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम, जो ज़्यादा इसमें कंफ्यूजिंग है वो ये दो आपस में कंफ्यूजिंग होंगे, लेकिन इसका भी मैं कोशिश करता हूँ आपको समझ आ जाए। यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि जो भी लॉ बनता है वो सब के लिए बनता है। इट इज फॉर द whole community, and if you ask a question who will have to follow it, everybody will have to follow it. यूनिफॉर्मिटी, सबके लिए एक जैसा लॉ बनता है। बट इसमें ये केयरफुल रहना होता है कि जो the people we are calling everybody or all of the people, वो कौन लोग हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ लॉ विच इज मेड फॉर पाकिस्तान, obviously that will only be applicable to Pakistan and it will only be for the people of Pakistan. It will not be for the people of America. Agar Pakistan में भी if there is a law which is applicable, which is made for one province, maybe Punjab or Sindh, then it will be made for that one province only. So ये थोड़ा सा केयरफुल रहना है. We are not saying that one law is applicable to the to everybody living in the world. It can be a very small community जिसके लिए लॉ बना है. It can be an international law जो सबको फॉलो करना है. तो इसलिए ये चीज थोड़ा सा देखनी है. बट आइडिया इज कि जब लॉ बना है तो वो सबके लिए बना है. नाउ इफ यू रिमेंबर, यूनिफॉर्म जो एक स्कूल में या किसी एक जगह का यूनिफॉर्म होता है, दैट इज फॉर एवरीबॉडी. सब ने वो यूनिफॉर्म पहनना होता है. सो इसी तरह अगर कोई लॉ बनता है तो सब ने उसको ओबे करना होता है. जिनके लिए भी लॉ बनता है वो सारे उसको ओबे करते हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज यूनिवर्सैलिटी. देयर इज अ वेरी थिन डिफरेंस जिसको समझना जरूरी है. नाउ लॉ इज एप्लीकेबल टू द होल सिविक कम्युनिटी. लॉ बना किसके लिए है? सबके लिए. दैट इज नोन एज यूनिफॉर्मिटी. लॉ एप्लीकेबल किस पे है? टू एवरीबॉडी, जिसके लिए भी वो बना है. इसमें एक और एंगल से जरा देखो. Who will have to follow the law? We will say everybody will have to follow the law. That is the uniformity part. What if anyone breaks a law? Everybody will be treated the same.
universality. It is applicable to the whole civic community. So it means for all the individuals living in the state, सबके लिए same law होगा. No matter, no man whatsoever can claim exception from the obedience of law. And the principle of equality before the law. ये पॉसिबल नहीं है कि लॉ बना तो सबके लिए है लेकिन बाद पे अप्लाई सब पे नहीं हो रहा. तो ये दो डिफरेंसेस है, यूनिफॉर्मिटी एंड यूनिवर्सलिटी के. देन दिस थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू एक्सटर्नल एक्ट्स till the time anything which is there in your inner thoughts or in your intentions, law is not applicable. The moment you're going to make it external, law will be applicable. For example, if you're thinking to do some crime, only thinking, law will not be applicable. Now, the moment your intention or your thoughts that you were thinking, you made them external, law will be applicable. Now, how can we make it external? You may talk to somebody about it. You may give a hint to somebody about it. You may write it on a piece of paper. You're not talking to anybody, but you're writing on a piece of paper, you're making it external. Even by your gestures or by any verbal communication or any sort of communication, you are trying to tell your intentions. That is external. Till the time you're only and only thinking about it, or you have the intention to do something, law cannot be applicable because law cannot enforce intentions or thoughts. It cannot manage your intentions and thoughts unless you make them external. There is no mechanism through which law can enforce honest thoughts in minds of people. So law is not applicable on anything that is not external. Law is only applicable to external acts. Then there is content. Every law, every statement of law will have some content. If you just recall the word table of content, what is that? It is a table which is telling you about the content in a report. Content means something written, something explanatory, something in words, something making sense, some logical writing. That is known as content. So today's law and most of the laws in history, they have a content, which means if you ask, for example, what are the laws of Pakistan? So people are going to give you the constitution of Pakistan, that these are the laws according to which Pakistan is being governed. So that is known as the content of the law, what it contains. That is also a characteristic of law. If somebody is just saying it, so it cannot be a law. Then there is formulation. This is also one of the characteristics, that every law will be made according to some formula.
formulation, formula. So if there is no formula, or if a law has been made without a formula, it is not a law. Formula does not mean that it has to be a very complicated thing. It has to be some process. For example, in one state, there is a formula that everything said by the king will be a law. Then this is the formula, that everything said by the king will be law. And in one country, there is a process or there is a mechanism that parliament is going to be involved, or people are going to be involved, and there's going to be voting, and there's going to be referendum, and after that it is going to be debated, and then president will have to sign, prime minister will have to sign. Whatever process is there, that process is known as the formula or the formulation of law, that all laws today are made according to some formula. So laws are prepared according to some formula or a procedure by the state or the legislative organ. A mere custom cannot be a law unless it is formulated by the state or the authority. We will also talk about lawmaking in Pakistan, which will give us a fair idea about this formulation. The last characteristic is the sanction. Now, if you make a law and you're not giving any punishments and rewards with it, it cannot be a law. For example, there is according to traffic laws, you cannot cross red light. Fine, this is the law. It has been created with some formula. It has some content. It is applicable to everybody. But what if you do it? So if you do it, there's going to be a challan for 500,000 or maybe 2,000 rupees, or you might have to go to a jail if there is an accident or something. So with all laws, there are punishments and rewards that are attached. Those punishments and rewards are known as sanctions. So the state enforces the law by force. What is that force? That force is the sanction. Why do we not break laws? Because of this punishment that we may get. So the punishment can be given in the form of fine, confiscation of property, etc., or even imprisonment. So these are the 6 characteristics. Whenever you see a law or whenever somebody is talking to you about a law, you need to make sure that these 6 characteristics are there in that statement or they are there in that law. So the next thing is the sources of law. So there can be many sources of law, but these are the most important ones. Customs and usage, religion, judicial decisions or precedents, scientific commentaries, equity, and legislation. Now we'll talk about one by one. First of all, customs or usage. बहुत सारी ऐसे लॉज बनते हैं कंट्रीज में, स्टेट्स में, प्रोविंसेस में, जो किसी स्पेशल यूजेज की वजह से बनते हैं. और दुनिया में भी ऐसे लॉज इसलिए बनते हैं कि कोई नई चीज का यूजेज शुरू हो जाता है. मैंने यहाँ लिखा हुआ है साइबर लॉज. इसका मतलब ये है कि जब हम
हमारे पास इंटरनेट था ही नहीं, तो इंटरनेट के लॉस की जरूरत भी नहीं थी। बट जैसे जैसे इंटरनेट का यूजेज ज्यादा हुआ है, ऑल्दो इंटरनेट तो आई थिंक 80 70s 80s से स्टार्ट हुई है, बट इन पाकिस्तान it was mostly used for businesses and other things in 2005 6 7 8 9 10. So from 2001 to 2010 the usage became too much for our personal life and for the business life. So what happened was that people started thinking that there should be some laws according to which this internet should be governed. Usage हुआ, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं उन्होंने अपने ऑर्डर्स ईमेल पे लिखना शुरू कर दिए लोगों को। अब वो उसको लीगल प्रोटेक्शन कोई भी नहीं है, हो सकता है कोई किसी को ईमेल पे थ्रेट करना शुरू हो गया हो, अगेन लीगल प्रोटेक्शन कोई नहीं है। सो जैसे जैसे यूजेज बढ़ता गया तो स्टेट्स को साइबर लॉज बनाने पड़े। इसी तरह आपने देखा मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन्स का यूजेज जैसे जैसे बढ़ता गया तो फोन जो है वो बहुत सारे क्राइम्स में यूज होना शुरू हो गया। इसके लिए भी लॉज बन गए कि बायोमेट्रिक होगा एंड इसका IME नंबर होगा, वो PTA में रजिस्टर्ड होगा एंड ऑल दोज थिंग्स। सो यूजेज जो है वो एक सोर्स है जो कि जिससे लॉज हम बनाते हैं, जिसकी वजह से लॉज बनाते हैं, जिसको देखते हुए लॉज बनाते हैं। So customs and usage is one thing. Then a very famous source of law is the religion. It can be any religion, but almost all religions have described laws, and countries having a certain religion imposed on their people, they follow their religious books. For example, Bible, Quran and other books are followed and उनमें से laws निकाले जाते हैं। हदूद laws for example, इस तरह biblical laws। So religion obviously बहुत एक important source है laws का, जहाँ से बहुत सारे laws जो हैं वो derive किए जाते हैं। Then we have the judicial decisions. ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है। ये समझने वाली चीज इस तरह है कि जो भी प्रीवियस केसेस आपकी कोर्ट्स में हुए होते हैं, दे आर रिकॉर्डेड, दे आर रिटन, एंड उन केसेस के जितने भी डिसीजंस हुए होते हैं दे आर आल्सो रिकॉर्डेड ऑन ईयरली बेसिस एंड ऑन अ टाइप ऑफ केस। सेपरेट बुक्स में आजकल इंटरनेट पे पब्लिश हो जाते हैं। एंड देन अगर कुछ सेम सिचुएशन फ्यूचर में आप फेस करते हो उसी तरह के केस की जिसका कोई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने दिया हुआ होता है, तो आप पुराने डिसीजन को रेफर करते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ फाइट बिटवीन A एंड B और ये फाइट 2001 में हुई थी और 2001 में जो केस था उसका कोई ना कोई डिसीजन आ गया था और डिसीजन सपोज ये आया था कि A was found guilty और उसको पनिशमेंट होगी। Now if the same or a kind of same scenario happened in, for example, 2021, now what will happen? The lawyers are going to give reference of this case which was decided in 2001 by a competent judge, and they are going to say that the same punishment should be given. Now obviously they are not the same person, but the situation is almost the same. So they will say that because
In this kind of situation, a judge of Supreme Court gave punishment to A, so punishment should be given to A. The lawyers are going to be fighting for. Maybe there was some other scenario in 1995 in which judge did not give punishment to anyone. So the other lawyer is going to say that according to my reference, the punishment was not given to anyone. So when they are citing these previous decisions, they are known as precedents. Precedents जो previously set हुए हैं. हम usually बातों में नहीं कह रहे होते कि ऐसा नहीं कर सकते, फिर precedent set हो जाएगा, फिर हर बंदा कहेगा ऐसे करें. तो जो previous judicial decisions होते हैं, they are known as precedents and they are also source of law. इनसे भी justice करने में काफी help मिलती है. Okay, then there is scientific commentary. Scientific commentary का मतलब है कि कई दफा judiciary जो है, they are not expert in everything. For example, if there is a murder case, so judiciary will have to take help of some medical specialists, postmortems और some medical reports. तो मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो कहाँ से आती हैं? वो आपके जो दूसरे साइंटिफिक एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल जो डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर है, वो आपको आके बताता है सारा. अगर कोई कॉल मैसेज पे कोई क्राइम होता है तो आपको टेलीकम्युनिकेशन वाले लोग उसमें कमेंट्रीज देते हैं और साइंटिफिकली समझाते हैं कि किस तरीके से लॉ को डील किया जाए. इसी तरह फॉर एग्जांपल ईमेल है, साइबर लॉज अगर बने हुए हैं तो साइबर लॉज में साइंटिफिक कमेंट्रीज भी बड़ा काम आती हैं कि वायरसेस भी हो सकते हैं, स्पैम्स भी आ सकते हैं, ईमेल्स कैन बी जनरेटेड फॉल्सली. तो जब हमारी वो जो बिलियन पाउंड की लॉटरी निकल आती है ईमेल पे, तो वो ये बताया जाता है कि ये दिस इज नॉट ट्रू, ऑल्दो आपको ईमेल कर रहा है और ईमेल करना मीन्स कि वो कॉन्ट्रैक्ट है किस्म का, तो लेकिन जब स्पैम वगैरह आता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. तो साइंटिफिक कमेंट्री भी हमें हेल्प कर देती है. देन देयर इज इक्विटी एज अ सोर्स ऑफ लॉ. इक्विटी का मतलब ये है, इक्वालिटी एंड इक्विटी में डिफरेंस है. इक्वालिटी इज कि अगर मेरे पास 90 रुपीज है एंड आई हैव टू डिवाइड इट अमंग 3 पीपल, मैं 30 रुपीज तीनों को दे दूंगा. दैट इज इक्वालिटी. इक्वल. इक्विटी इज कि जो भी बंदा जिस चीज को डिजर्व करता है उसको उतने पैसे या उतना शेयर मिले. सो लॉ जो है वो इक्विटी बेस्ड होता है, वो इक्वालिटी बेस्ड नहीं होता. एंड इक्विटी इज अबव लॉ. हम यूजुअली इसको कह रहे होते हैं इक्विटी इज अबव लॉ. फॉर एग्जांपल, अगर बहुत दफा आपने सुना है कि कोई घर है, कोई प्लॉट है, वो एक बंदे ने 2 लोगों को सेल कर दिया है. रजिस्ट्री जो है वो 2 लोगों के नाम एक ही प्लॉट की होगी, ये फ्रॉड हो गया. अब लॉ के मुताबिक तो यह है कि जिसके पास भी रजिस्ट्री होगी, जो भी ओरिजिनल सेलर से खरीदेगा और जो भी बायर होगा, दैट इज फाइन. बट अगर ये फ्रॉड ऐसा हो जाता है तो फिर इक्विटी कम्स इन. तो इक्विटी ये कहती है कि जिस बंदे के नाम, फॉर एग्जांपल ए जो है ये सेलर है, बी फर्स्ट बायर है एंड सी सेकंड बायर है जो एक ही जगह जिसको बेच दिया. इसको इसने ये पहले प्लॉट बेच दिया से 1 जनवरी और इसको इसने 10 जनवरी को सेम प्लॉट बेच दिया समहाउ. अब ये दोनों एक्चुअली कहने को तो ये दोनों मालिक बन गए, बट फ्रॉड हो गया ना, दोनों को एक ही जगह बेच दिया. सो लॉ तो कहता है ये दोनों मालिक हैं. ज्यादा इसकी हम डिटेल्स नहीं डिस्कस कर रहे, वो किसी और टाइम करेंगे. बट
इक्विटी ये कहती है कि बिकॉज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसने पहले खरीदा हुआ है तो ये तो हो गया मालिक, तो ये के साथ हो गया खत्म, सेलर बायर तो ये हो गए, ये तो खत्म होगी सेल। बट ये जो सी है ये ए के खिलाफ फ्रॉड का केस कर देगा और फ्रॉड जो है वो देखा जाए। दूसरी बात देखो, लॉ खुद ही ये कहता है कि किलिंग द अदर पर्सन इज नॉट अलाउड एंड नॉट गुड, इट्स अ क्राइम, शुड नॉट डू इट, which is fine. But then when we give the death penalty to a person, we are actually killing a person. But we are killing a person because of the equity कि वो deserve करता है वो. So that is why your equity is considered as above law. Then there is a last source that we will talk about, that is legislation. Legislature process. Actually legislation आपकी कंट्री की, स्टेट की वो ब्रांच होती है जो लॉज बनाती है। फॉर एग्जाम्पल जुडिशरी है, पुलिस है, ब्यूरोक्रेसी है, ये सारे ऑर्गन्स हैं कंट्री के जिसकी वजह से कंट्री चल रही होती है। तो जो ऑर्गन लॉ मेकिंग में हिस्सा ले रही होती है, लॉ मेकिंग में इन्वॉल्व होती है, लॉ मेकिंग उसके पास अथॉरिटी होती है, उसको हम लेजिस्लेशन अथॉरिटी कह देते हैं, लेजिस्लेचर उसको कह देते हैं। सो इसमें आपकी पार्लियामेंट भी इन्वॉल्व हो सकती है, समटाइम्स इसमें आपकी कुछ कंट्रीज की कांग्रेस भी इन्वॉल्व हो सकती है, या जो भी जिस कंट्री का प्रोसेस है उस कंट्री के हिसाब से आपकी जो लॉ मेकिंग है वो हो सकती है। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ लॉ जिससे हम अपने लॉ जो हैं वो ड्राइव कर रहे होते हैं।